Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Online Teaching with Deepa. Today I'm going to teach about addition from a regular method and Vedic method. So let's see which will be the fastest. If you're new to my channel, like, share and subscribe my channel. So first we'll start with our regular method. So this is our regular method. This is Vedic method. So in regular method, we are going to add the numbers. So we're going to add the numbers. So 4 plus 1 is 5. 8 plus 2 is 10. So we'll take the carry here. So this both 6 plus 1 is 7 and 7 plus 7 is 14. So we'll take carry one more here. So it will be 8. 7 plus 1 is 8. 8 plus 5 is 13. So this we got the answer from the regular method. So how to solve it in the Vedic method? So how to solve this thing from a Vedic method? Here in a regular method, we'll start our calculation from the right side. Okay, we'll start our calculation from the right side, and here in the Vedic method, we'll start our calculation from the left side. Yes, we are going to start our calculation from the left side. So let's start. 7 plus 5 is 12. So 7 plus 5 is 12 and 6 plus 7 is 13. So you have to leave this last number and then you have to write below this unit digit. You have to write below the unit digit these two numbers. And 8 plus 2 is 10. So you have to write it like this. 4 plus 1 is 5. So because this is a single digit, so we have to take it in a double digit. So we have to take 0, 5. So you have to take here 0, 5. Then you have to add all this together. So 5 you have to add here. So 5, you get 5. You'll get 5 here and 0. 3 plus 1 is 4 and 2 plus 1 is 3 and 1 is remaining. See, you got both the answers are same. So this is a without carrying and all you can do this method. And this is a very easy method and it's a time saving method. So let's solve one more problem. So चलिए इसको solve करते हैं. So let's start with that. So 6. So पहले हमको क्या करना है? Left side से start करना है. So always for the Vedic method you have to start the addition from the left side. So 8 plus 4 is 12. 1 plus 5 is 6. You have to take two in a 2 digit. 2 digit में आपको लेना है तो 0, 6 आपको लेना है. 0, 6. So 3 plus 2 is 5. तो 0, 5 हम लेंगे. 7 plus 6 is 13. So इन सबको ऐड करना है. तो 3 आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना है. 5 plus 1 is 6. 6 plus 0 is 6. 2 plus 0 is 2 and 1 plus and 1 is. So this is your answer. Now we'll take some other method. This is this is also one different method in Vedic Maths. So इसको हम solve करेंगे. ये भी एक अलग मेथड है. आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. इसको आपको इन नंबर्स को आपको स्प्लिट करना है, एक्सपांड करना है. ठीक है, एक्सपांड करेंगे कैसे? 521 तो आपको 500 प्लस 20 प्लस 1 ऐसे ही प्लस करना है. फिर 700 प्लस 20 प्लस 8. सो इस तरह से आपको एक्सपांड करना है. अभी 500 प्लस 700 हमको आसानी से हम ऐड कर सकते हैं. 7 प्लस
500 plus 700 is equal to 1200 और ये 20 प्लस इस 22 40, तो इन दोनों को आपको ऐड करना है, 40 हो जाएगा। और 1 plus 8 is equal to 9। सो फिर इसको ऐड करेंगे हम, ये हो गया 1240 प्लस 9 प्लस 1249। सो ये हो गया इसका। सो इस नंबर को हम अभी एक्सपांड करेंगे। फर्स्ट लेट्स एक्सपांड दिस नंबर। विल स्टार्ट टू एक्सपांड दिस नंबर। 200 plus 40 plus 8 plus 700 plus 60 plus 3 plus 900 plus 80 plus 0. So 200, 700 and 900. This all you have to add. So 900 plus 700. So 900, 700 and 200 is equal to 1800. So 1800 will write here. फिर हमें 40 plus 60 plus 80 करना है। 40 plus 60 हो गया 100 और 100 plus 80 हो गया 180। तो 180 हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट 8 plus 3, क्योंकि यहाँ तो 0 है, 0 तो आप ऐड नहीं कर सकते। 8 plus 3 is equal to 11। सो फिर से इनको ऐड करना है। फिर से इनको ऐड करने के बाद आपका आंसर आता है। Then this is your answer. सो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आया है। सो वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को भी, उससे उनको भी हेल्प मिलेगा, उनको भी मैथ सीखने में इजी होगा और उनको। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड।